क्रांतियों का सारथी, बलिदानों का महारथी, क्रांतियों का सारथी, बलिदानों का महारथी, निरंतर किया संग्राम, डटा रहा बिना विराम, निरंतर किया संग्राम, डटा रहा बिना विराम, कार्मिकों के हक और हित में अविचलित अपने पथ में, कार्मिकों के हक और हित में अविचलित अपने पथ में। ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन का सफर, एसबीआई फेडरेशन का है ये हीरक उत्सव। Comrades, we are celebrating the platinum jubilee year of our mighty federation. The history of our federation we will see. Before that, we should know the evolution of State Bank of India, because the bank and the federation coexist. Bank of Kolkata was set up in 1806 by the East India Company's Government of India, which was later renamed as Bank of Bengal. Later, Bank of Bombay and Bank of Madras were established in the years 1840 and 1843. These three presidential banks were merged in the year 1921 to form Imperial Bank of India. Finally, the Imperial Bank was transformed into State Bank of India in 1955 by a special enactment. The ruthless exploitation, limitless working hours, meager salary, slavery, and very pathetic working conditions prompted the bank employees to form themselves as unions to fight for their better service conditions. In these extreme situations, Imperial Bank of India Indian Staff Association was formed by the brave employees of Bank of Bengal in the year 1920, much before the enactment of the Indian Trade Unions Act. Imperial Bank of India Indian Staff Association Chennai Circle was formed in the year 1946, which was later changed to Imperial Bank of India Indian Staff Union. अंधियारे भरे जीवन में आशा की किरणें बनकर दमन के राज का अंत करने उभर हमारा एसोसिएशन। यही तो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ एसोसिएशन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ एसोसिएशन। गोरों के शोषण के खिलाफ उठी मिलकर ये आवाज, लहराया एक नया झंडा, हमारा अपना झंडा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन झंडा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन झंडा। A need was felt to form an All India Association for Bank Employees, and it is surprising to note that Imperial Bank of India Indian Staff Association was instrumental in the formation of All India Bank Employees Association, that is AIBEA. Comrade Devabrata Ghosh was made Joint Secretary of AIBEA. But the political parties influenced the union and shattered the Bank Employees United Movement. With the principle of functioning independently, the SBI Union came out and began functioning as a non-political organization. Comrades, the principle of independent and non-political union was prime, and still we are successful in running the federation with serving employees alone by strictly adhering to the independent and non-political entity. The marathon struggle for 46 days from 1st August to
15th September 1946 by the Kolkata Association was led by Comrade Devabrat Ghosh. This first bank employees strike opened the eyes of the bank employees to fight for their rights in different parts of the country. This indefinite strike was the basis for active trade union movement of bank employees. वहती बंगाल एम्प्लॉय सर्किल के योद्धाओं की हुंकार, गुलामी को जीती हुई उनकी जोश भरी ललकार, खालिद खून से लिखी सेनानी ने विप्लव की गाथा, गुलाम देश के कार्मिकों ने लहराया क्रांति का झंडा। 46 दिन की ये लड़ाई, बंगाल सर्किल की ये लड़ाई, वेतन बढ़ाने के लिए शुरू हुई थी ये क्रांति, छुट्टियों की मांग से सुलग उठी ये चिंगारी। मेडिकल रीइंबर्समेंट और प्रमोशन हमने मांगा था, मेडिकल रीइंबर्समेंट और प्रमोशन हमने मांगा था। 46 दिन की ये लड़ाई, बंगाल सर्किल की ये लड़ाई। खटका अंग्रेजों की आंखों में हमारा ये आंदोलन, वेतन का लालच दिखलाकर चाहा इसे दबा देना। लाठी चार्ज भी किया, कार्मिकों का खून बहाया, लाठी चार्ज भी किया, कार्मिकों का खून बहाया। लेकिन रुका ना ये आंदोलन, सफल हुआ ये आंदोलन। The effect of above movement inspired the whole working class and made to believe that if you fight, you lose nothing but shackles of slavery, and motivated them to join hands together. The heroic sacrifice of bank employees resulted in getting the Gupta Award in 1947. Bengal and Madras unions came together and held an all-India conference on 23rd October 1947 at Madras. Comrades, this 23rd October 1947 is a historical day for all of us. It was in this conference the birth of a beacon came into existence, that is Imperial Bank of India Indian Staff Federation, with Comrade Soumyendranath Tagore as president and Comrade Jyoti Ghosh as secretary, which was later renamed as All India State Bank of India Staff Federation, to which we proudly belong to. मद्रास की धरती पर फेडरेशन ने रूप धरा, आजादी के आंदोलन में कार्मिकों को ढाल दिया। चले चलो नवोदय के प्रेरक बन, चले चलो नवोदय के प्रेरक बन। दमन करने वालों के दिलों को दहलाकर, शोषण करने वाली सरकार को ललकार
In the year 1951, the unions at Bombay, Pune, and Ahmedabad got merged into single union and became affiliate of the federation. In the founding conference held at Madras in October 1947, a resolution was passed demanding nationalization of banks and immediate takeover of Imperial Bank of India. The persistent demand of the federation resulted in transformation of Imperial Bank of India into State Bank of India from 1st July 1955. चल ओ अरे चल लाल झंडा वीरों का फेडरेशन झंडा लाल झंडा वीरों का फेडरेशन झंडा वीरों की मशाल ये झंडा फेडरेशन झंडा क्रांति का प्रतीक ये झंडा फेडरेशन झंडा वीरों की मशाल ये झंडा फेडरेशन झंडा क्रांति का प्रतीक ये झंडा फेडरेशन झंडा शहीदों की आन है ये पीड़ितों की आस है समर का जय गीत है ये अंधेरों की रोशनी है वीरों की मशाल ये झंडा फेडरेशन झंडा क्रांति का प्रतीक ये झंडा फेडरेशन झंडा वीरों की मशाल ये झंडा फेडरेशन झंडा क्रांति का प्रतीक ये झंडा फेडरेशन झंडा The implementation of the directions of the modified Shastri Award resulted in reduction of the emoluments of the bank employees as the scales of wages and DA formulae were inferior to those awarded by the Sen Tribunal. In these circumstances, the All India Imperial Bank of India Indian Staff Federation gave a call for 2-day strike on 6th and 7th January in the year 1956. With an intention to deflate the strike and create terror in the minds of bank employees, one day before the strike, in the early morning, the then Secretary of the Federation, Comrade Mohanlal Majumdar, was arrested and was released after 9 days. Despite that, the 2-day strike was total and complete. In the bilateral discussions held later with the management, the Federation was successful in achieving annual medical aid and 3 months DNS allowance. वो देखो अंबर पर छाया सड़क लाल परचम SBI कार्मिकों का सुबंकर ये परचम वो देखो अंबर पर छाया सड़क लाल परचम SBI कार्मिकों का शुभंकर ये परचम लक्ष्यों को पाने हेतु लगा रहा निर्विराम ऑल इंडिया SBI स्टाफ फेडरेशन का परचम लक्ष्यों को पाने हेतु लगा रहा निर्विराम ऑल इंडिया SBI स्टाफ फेडरेशन का परचम विशिष्ट बन विकास और प्रगति की ओर अग्रसर कर्तव्य में अगत सुख शांति फैलाकर विशिष्ट बन विकास और प्रगति की ओर अग्रसर कर्तव्य में अगत सुख शांति फैलाकर अरुणोदय लाकर आशा की किरणों भरकर सब मतभेद बुलाकर सामरस्यता बरकर अरुणोदय लाकर आशा की किरणों भरकर सब मतभेद बुलाकर सामरस्यता बरकर वो देखो अंबर पर छाया सड़क लाल परचम SBI कार्मिकों का सुबंकर ये परचम In the spirit of welfare of employees
and demanding for reference of disputes to voluntary arbitration, the Federation gave a call for nationwide strike from 4th March 1960. The then government once again showed adamant attitude towards bank employees and said that the strike was illegal and all employees should report for duty or otherwise would take stringent action against employees. The ban on strike came on 21st March 1960 along with the constitution of Desai Tribunal. But the unshakable employees, with lot of trust on our leadership, never stepped back and continued their struggle with more vigor than before. However, the strike of 21 days was called off after positive assurances from the government that the appointment of tribunal would not preclude the parties from having a settlement on the issues and there would be no victimization of our striking members. Nare 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 ro, nare 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 ro, nare 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 ro, nare 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 ro. चल लहराया फेडरेशन का झंडा, सरकार ने बदला अपना एजेंडा. लहराया फेडरेशन का झंडा, सरकार ने बदला अपना एजेंडा. सैकड़ों हाथों ने ये झंडा उठाया, सैकड़ों हाथों ने ये झंडा उठाया. नारों की गूंज से भर गई पूरी फिजा. 21 दिन ये हड़ताल चली, हार कर सरकार नीचे झुकी, हार कर सरकार नीचे झुकी. फिर आया देशाई ट्रिब्यूनल, फेडरेशन की जीती है ट्रिब्यूनल, फेडरेशन की जीती है ट्रिब्यूनल. चल लहराया फेडरेशन का झंडा, सरकार ने बदला अपना एजेंडा. लहराया फेडरेशन का झंडा, सरकार ने बदला अपना एजेंडा. The Desai Award, which was published on 30th June 1962, also suffered serious inadequacies and certain recommendations were detrimental to the interests of bank employees. Since then, the Federation was demanding for bilateral negotiations at bank level for settlement of issues and could achieve the same since the year 1964. But these happy moments of working class did not last longer as the then government announced the emergency in the country and sent whole country into gloom. All labor laws and rights of working class were withdrawn. The days of emergency were really turbulent period for labor unions. शक्ति के दमन के लिए केंद्र में सरकार ने कई काम किए. फेडरेशन की शक्ति के दमन के लिए केंद्र में सरकार ने कई काम किए. प्रतिबंध लगाया, रोका टोका, छोड़ा ना एक भी रोका. उनके हकों को छीना, दुर्बर कर दिया जीना. उनके हकों को छीना, दुर्बर कर दिया जीना. Our federation successfully celebrated its silver jubilee in the year 1974 at Madras. Its golden jubilee celebrations in the year 1997 at Pune. In an electrifying manner with enthusiastic participation of all members. Under the leadership of Comrade P.K. Patnaik, the then Secretary,
All India State Bank of India Staff Federation, along with All India State Bank Officers Federation, went on indefinite strike of 6 days from 3rd April to 9th April 2006 and could achieve improvements in pension. कार्मिकों के हक के लिए लड़ने वाले नेता आप सभी को शत शत लाल सलाम। आपके त्याग, आपका श्रम व्यर्थ न होगा। फेडरेशन की कसम। लाल लाल है ये झंडा, अरे लाल सलाम है ये झंडा। लाल लाल है ये झंडा, अरे लाल सलाम है ये झंडा। हम सबकी ताकत ये झंडा, हम सबकी स्फूर्ति है ये झंडा। हम सबकी ताकत ये झंडा, हम सबकी स्फूर्ति है ये झंडा। हक के लिए है ये झंडा, फेडरेशन का है ये झंडा। हक के लिए है ये झंडा, फेडरेशन का है ये झंडा। अरे लाल 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 सलाम। लाल लाल है ये झंडा, अरे लाल सलाम है ये झंडा। लाल लाल है ये झंडा, अरे लाल सलाम है ये झंडा। वीरों का भूषण ये झंडा, हमारी एकता ये झंडा। वीरों का भूषण ये झंडा, हमारी एकता ये झंडा। पूनम की चांदनी ये झंडा, चंदा की ठंडक ये झंडा। पूनम की चांदनी ये झंडा, चंदा की ठंडक ये झंडा। पूरब का सूरज ये झंडा, जग का उजियारा ये झंडा। पूरब का सूरज ये झंडा, जग का उजियारा ये झंडा। कार्मिकों का हक ये झंडा, नेता ने उठाया ये झंडा। कार्मिकों का हक ये झंडा, नेता ने उठाया ये झंडा। अरे लाल 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 सलाम। लाल लाल है ये झंडा, लाल लाल सलाम है ये झंडा। लाल लाल है ये झंडा, अरे लाल सलाम है ये झंडा। Our committed and disciplined leadership at Federation have fought and brought so many benefits through bilateral agreements and functioning seamlessly for the well-being of our comrades in every step it takes. The leaders who are behind the successful completion of bipartite agreements are: third bipartite, Comrade Nirmal Chaudhary; fourth, fifth and sixth bipartites, Comrade P. Lakshmi Narsaya; seventh bipartite, Comrade Y. Taraknath; eighth bipartite, Comrade P. K. Patnaik; ninth bipartite, Comrade Prakash Gangal; 10th bipartite, Comrade M.V. Murali; 11th bipartite, Comrade Sanjeev Kumar Bandlish. Lal Salam, comrades, Lal Salam, Lal Salam. The wisdom and foresight of the leadership of our federation has secured several benefits to the membership, and the flag of the federation is continuously flying high always with these achievements. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो 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 ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो
अमरवीरों का सुंदर सपना, जय हो जय हो, हक के लिए किया आंदोलन, जय हो जय हो, कार्मिकों के दिल की धड़कन, जय हो जय हो, त्यागों से सिंचित ये झंडा, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो। लाठियों से वार किया, दमन का प्रयास किया, हम पर प्रतिबंध लगाया, जेलों में डाल दिया। बिना रुके बिना झुके हर कदम आगे बढ़ा, कामरेड मजूमदार की जय हो जय हो, कामरेड निर्मल चौधरी जय हो जय हो, कामरेड चार्ल्स कुट्टो जय हो जय हो, कामरेड लोकनाथन जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो। गलत केस ठोक कर डराया धमकाया, लेकिन झांकी बाजी लगाकर क्रांति के लिए अंकित होकर आंख के आंसू को जलता हुआ लावाहिल होने बनाया। हमारे लक्ष्मी नरसैया की जय हो जय हो, प्रिय कामरेड तारक नाथ की जय हो जय हो, हमारे लक्ष्मी नरसैया की जय हो जय हो, प्रिय कामरेड तारक नाथ की जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो। यूनियन हमारा हक है, हड़ताल हमारा हक है, एकजुटता में ही शक्ति यही हमारा नारा है। सरकारी प्रलोभनों के आगे ना झुकने वाले नेता, कामरेड पटनायक की जय हो जय हो, क्रांति की लहर प्रकाश गंगल जय हो जय हो, कामरेड पटनायक की जय हो जय हो, क्रांति की लहर प्रकाश गंगल जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो। आंदोलन की स्फूर्ति को हमारी नस नस में भरकर क्रांति का शक्ति पुंज बन सफलता की राह दिखाई। त्यागों का प्रतिबिंब आप फेडरेशन का सूत्र आप, निर्मल मूर्ति अम्बी मुरली की जय हो जय हो, फेडरेशन के महारथियों की जय हो जय हो, निर्मल मूर्ति अम्बी मुरली की जय हो जय हो, फेडरेशन के महारथियों की जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो। कौन है ये, कौन है ये, फेडरेशन के सरताज है ये, हमारे युद्ध के नायक ये। कौन है ये, कौन है ये, संजीव के बंदलिश है ये। कौन है ये, कौन है ये, फेडरेशन के सरताज है ये, हमारे युद्ध के नायक ये। कौन है ये, कौन है ये, संजीव के बंदलिश है ये, सीधी बात करने वाले, हमारे हित में लड़ने वाले।
बड़े दिल वाले महानेता, कार्मिकों के सच्चे साथी, बाइपार्टाइट चर्चाओं में सीधी रखते अपनी बात। बड़े दिल वाले महानेता, कार्मिकों के सच्चे साथी, बाइपार्टाइट चर्चाओं में सीधी रखते अपनी बात। कौन है ये संजीव के बंदिश है ये, प्रिय संजीव के बंदिश है ये। परिवार चलाने वाला कॉमरेड अगर मर जाए अनुकंपा नियुक्ति के बिना, घर आपदा में फंस जाए। ऐसे अंधेरे घरों को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने वाले, 11वें वेज सेटलमेंट से जीवन में सुख और खुशियां भरने वाले। कौन है ये संजीव के बंदिश है ये, प्रिय संजीव के बंदिश है ये। फेडरेशन के क्रांति सारथी, आंदोलन के महारथी, नई पीढ़ी के रक्षक, फेडरेशन के महानायक, संजीव के बंदिश है ये। सैल्यूट कॉमरेड बंदिश, सैल्यूट कॉमरेड बंदिश, सैल्यूट कॉमरेड बंदिश, रेड सैल्यूट कॉमरेड बंदिश। All the federation presidents who worked relentlessly by giving immeasurable support to general secretaries of our federation in the historic journey are unforgettable, and those great stalwarts are Comrade Saumendranath Tagore, Comrade K.C. Shah, Comrade T.S. Ramanujam, Comrade Nirmal Kant Bose, Comrade Ajit Rai Mukherjee, Comrade S.M. Joshi, Comrade Tridip Chaudhary, Comrade C.L. Rajaratnam, Comrade Mohanlal Majumdar, Comrade M.R. Avasti, Comrade R.O. Shah, Comrade K.K. Bandlish, Comrade P.K. Patnaik, Comrade Umesh P. Nayak, Comrade V.K. Gupta, Comrade O.N. Bindru, Comrade Bhupen Chandra Kalita, Comrade Sanjeev Kumar Bandlish, Comrade V.V.S.R. Sharma, Comrade Ajay Badani, Comrade Siddharth Khan, and presently Comrade Arun Bagoliwal. सांसें हैं फेडरेशन, नस नस में फेडरेशन, धड़कन में फेडरेशन, जीवन में है फेडरेशन। 75वें वर्ष में फिर लहराए फेडरेशन झंडा, दिल की धड़कन फेडरेशन की जय हो जय हो, खून में बसे फेडरेशन की जय हो, आंदोलन का स्वर फेडरेशन की जय हो, एकता का प्रतीक फेडरेशन जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन की जय हो, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फेडरेशन जय हो।